Welcome students in the new class. Today our topic is heating. Heating effect of the current. The heating effect of the current. So you can find this topic in the YouTube channel by searching heating effect of the current by Ab Majee. तो जहाँ तक हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट है का ताल्लुक है, तो हम अपने रोजमर्रा की प्रैक्टिस में ये देखते हैं कि व्हेन ए करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर से करंट जब फ्लो करते हैं तो क्या होता है, हीट गेट्स प्रोड्यूस्ड, दैट कंडक्टर गेट्स हीटेड. This heating depends upon the nature of the conductor and what type of conductor. Some conductors get more heated, some conductors get less heated, but there is heat produced in the conductor. That conductor gets heated. So this process is known as the heating effect of the current. So this was examined by the Joule in 1941, and he said that this heat produced in a conductor, it depends upon certain things. According to Joule, heat produced in a conductor depends upon, that means H जो है it depend किसका पता है, it is equal to I square RT. I है current, और जो है रेजिस्टेंस है, एंड T जो है दिस इज टाइम for the current flow. So this was given by the Joule. So this is known as, and that is why we call it as Joule's law of heating. तो इसी तरीके से तो जो ये हीट प्रोड्यूस होते थे किसी भी कंडक्टर में, इट डिपेंड्स अपॉन दीज थिंग्स. अब हम देखेंगे व्हाट इज द कॉज ऑफ हीटिंग. कॉज क्या है? कॉज ऑफ हीटिंग, यानी हीट एक कंडक्टर होता क्यों है? तो हम देखते हैं व्हेन वी अप्लाई a certain potential difference between the conductors, between the ends of the conductor, तो क्या होता है, जो ही हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो करंट फ्लो होनी शुरू हो जाती है कंडक्टर के दरमियान. तो जो ये करंट फ्लो करती है, ऑन अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस जब हम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, करंट फ्लो करती है, करंट फ्लोज. जो करंट फ्लो करते हैं, इट इज ड्यू टू द चार्जेस, दैट मीन्स द चार्जेस फ्लोज, चार्ज फ्लोज. चार्ज जो होता है, चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव. जब ये इलेक्ट्रॉन मूव हो जाते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड,
of the conductor. तो क्या होता है? They collide with they collide with ions and atoms. यानी ये कोलाइड करते हैं किनके साथ? एटमों के साथ और आयनों के साथ. तो जब ये कोलाइड करते हैं, दे इम्पोर्ट एनर्जी to एटम्स और आयन. तो जो एनर्जी इनको इंपोर्ट करते हैं, तो यही एनर्जी होती है कन्वर्ट हीट में होती है. तो इसी तरीके से ये कंडक्टर जो होता है हीट अप हो जाता है. सो दिस इज द कॉज ऑफ हीटिंग अकॉर्डिंग दिस व्हेन द करंट फ्लोज through the conductor. So when current flows through the conductor, there is a heating, and this is due to the cause of the heating. Then when the free electrons flow on applying the potential difference between the ends of the conductor, they collide with the atoms and the ions of the conductor, and they import kinetic energy to the atoms or the ions, and they get heated. तो अब हम देखेंगे, चूंकि हम अपना सेल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी टेक ए कंडक्टर, दिस इज अ कंडक्टर, वी अप्लाई सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस टू दिस कंडक्टर. When we apply certain potential difference this conductor, for example, let the resistance of the conductor is R, and the potential difference applied by this battery is V, so it is V and 0. That means V and 0 है इसकी potential difference. तो अगर हम ये बताएंगे that current I flows through the conductor on applying this potential difference. So current I flows and potential difference is V, and the resistance of this conductor is R. तो जो ये करंट फ्लो करते हैं, ये किस चीज से फ्लो करते हैं? ये पढ़ते हैं when the charges flow, that means Q charges flow through the conductor. Charge flows, and let this charge flow for time t. यानी चलो अगर ये Q चार्ज फ्लो करता है टाइम t के लिए और करंट I फ्लो करते थ्रू द रेजिस्टेंस, then we can say what will happen. For example, now जो करंट होती है I, वो किसके बराबर होता है? That is equal to the charge flowing divided by time, that is equal to Q by T. Or you can say Q is equal to IT. So the charge flowing through this conductor is IT when you apply the potential difference V between the ends of the conductor. अब देखिए जो ये बैटरी है, इस बैटरी की वजह से क्या होता है? ये चार्ज फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं थ्रू दिस कंडक्टर. सो दैट मीन्स दिस जो बैटरी है ये ईएमएफ अप्लाई करती है. दिस ईएमएफ मीन्स इट अप्लाइज एनर्जी, इट गिव्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स to flow. They cannot, this battery doesn't produce electrons, they doesn't produce the charges, but it provides the energy to these electrons, and these are able to flow, to move through this conductor. So इनके पहले ही कुछ एनर्जी होती है, पहले ही इनमें थर्मल एनर्जी होती है, लेकिन that thermal energy doesn't make the electron to flow in a particular direction, but this energy, this EMF, which is applied by this V, because the energy by this battery, it forces the electrons to flow along a certain direction, which constitutes the current. अब देखिए, let this work done, the work done by this battery VVW. So what is the work done? So work done जो होता है ये, तो work done किस लिए होता है? तो this work done is to move these electrons through this conductor. So now what is now the potential difference? Therefore potential difference क्या होता है? Potential difference है, या हम ये कह सकते हैं that it is the amount of work done
in taking a unit charge from one end to the another end of this conductor. So by the definition of potential difference, V किसके बराबर होता है? V होता है W divided by Q, यानी work done per unit charge or work done in taking a unit charge from one end to the another end of this conductor. So this is called the potential difference. Or you can say this W will be equal to V into Q. So W work done, that is equal to V into Q. Or you can say W is equal to V, ऐसे ही रख सकते हैं, into Q क्या किसके बराबर? IT के बराबर, that is IT. It becomes VIT. तो अब चूंकि V किसके बराबर? IR के बराबर होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, that is equal to IR into I into T. I को I से सेव करते, that is equal to I square RT. So which is according to the Joule's law of heating, that W is equal to work done is equal to I square RT. तो यही W जो work done होती है, यही कन्वर्ट होते हैं. This work done, this work done is converted into heat energy. Therefore, H किसके बराबर आ गया? H इसके बराबर, इस W के बदले हम H भी लिख सकते हैं, that is I square RT. So heat produced through the conductor or in the conductor is equal to I square, H is equal to I square RT. Or you can say H is equal to I square RT. ये है जूल्स में. अगर इनको कैलोरीज में चेंज करेंगे तो जाएगा I square RT divided by 4.18 calories, because 1 calorie 4.18 के बराबर 4.18 joules के बराबर होती है. So this is the process of heating. So this is the heat produced in the conductor, that is called I square RT. अब हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक पावर. इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? जिस तरह पावर को कहते हैं, it is the rate of doing the work. So same is the case here. Here we say it is defined as the work done by the source of EMF in a circuit to maintain. It is divided as the rate at which the work done by the source of EMF in a circuit to maintain the current. यानी किस रेट के हिसाब से ये वर्क डन होती है टू मेंटेन द करंट, दैट मींस टाइम रेट ऑफ डूइंग द वर्क. तो इस तरीके से हम लिखेंगे देयरफॉर पावर जो होता है it will be equal to W by T. So power is equal to W by T. क्योंकि W जो बराबर होता है that is equal to VI divided by T, or you can say I square RT divided by T.
तो ये वर्ग ये कैंसिल हो गया. दिस इज व्हाट आई स्क्वायर आर. और you write vi into t. यहाँ हम लिख सकते हैं vi into t calories divided by 4.18. इसलिए यहाँ हम लिखते हैं vi into t divided by t, or we can say I square or t into t divided by t. That is what I square r. So यहाँ हम लिख सकते हैं it is v square I square r or vi. Either it is vi or it is I square or, so it is equal to power. So power is equal to vi और दे I square और. अब देखिए अगर हम इसके यूनिट्स देखेंगे, यूनिट्स vi, if v is in volts, I is in ampere, so 1 ampere into 1 volt ये बनता है 1 watt. So 1 watt कितना होता है? So the unit of power is said to be 1 watt if on applying 1 volt, applying a potential difference of 1 volt 1 ampere current flows through the कंडक्टर. सो अगर 1 वोल्ट अप्लाई करने पर 1 एम्पियर करंट फ्लो करते तो हम इसको कहेंगे 1 वॉट. तो इसके हायर यूनिट हैं, हायर यूनिट्स हैं 1 किलोवाट. 1 किलोवाट होता है 1000 वाट के बराबर. इसी तरह से 1 मेगावाट, 1 मेगावाट होता है 10 raised power 6 watts. That is equal to 1000 kilowatt. इसी तरह से दूसरा हॉर्स पावर, यह 746 watts. तो इस तरीके से इसकी यूनिट है. These are the higher watts, kilowatt, megawatt and horsepower. तो इस तरीके से हीट इफेक्ट ऑफ करंट कंप्लीट होगा.